कुछ लोग कहते हैं कि ये अलेक्जेंडर के डिसेंडेंट हैं। अलेक्जेंडर जब आया था तो उसके कुछ फ़ौज रह गए थे उनके रिलेटिव से, और कुछ लोग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से आए हैं। आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने रिसर्च किया चित्राल में, तो एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन में हमें ये पता चला है कि कैलाश के लोग जो है वो अलेक्जेंडर से पहले से चित्राल में आबाद हैं। हमारा कोई डेली प्रे नहीं है लाइक मुस्लिम्स, लाइक हिंदू, लाइक क्रिश्चियंस। हमारा सिर्फ ये सीजनली फेस्टिवल होते हैं जो हम 4 सीज़न में मनाते हैं, लाइक स्प्रिंग फेस्टिवल। और जोशी हम मनाते हैं बाहर की आमद की खुशी में, खुदा का शुक्रिया अदा करने के लिए। और ये 4 दिन चलता है। आज इसका पहला दिन है, कल श्रीकृति है और परसों छुटे जोशी है। छुटे जोशी मीन्स स्मॉल जोशी, और परसों जो है वो भोना जोशी है, बिग जोशी। उस दिन डिफरेंट टाइप के डांसेस होंगे और बहुत अच्छा दिन है, वो बड़ा जोशी है। तो उसमें बहुत सारे रिचुअल्स भी होंगे, लाइक मर्दों की प्योरिफिकेशन होगा और ख़वातीन की प्योरिफिकेशन होगा, और वो लोगों के ऊपर दूध छिड़केंगे और बाहर की आमद की खुशी के लिए ये वॉलनट ट्रीज के जो ब्रांचेस है ये हिला के बाहर की खुशी का वो इजहार करेंगे। कल सुबह सवेरे उठेंगे, टेंपल को सजाएंगे, गोड स्टेबल्स सजाएंगे, घरों को सजाएंगे। उसके बाद बच्चे इकट्ठे होकर ढोल बजाकर नाचते हुए जाएंगे जहाँ पे गोड स्टेबल्स हैं, और हर गोड स्टेबल पे उनको दूध दिया जाएगा। और घर के जितने भी फीमेल्स हैं उन सारे फीमेल्स को एक एक कप दही मिलेगा। और शाम को एक रिचुअल है जिसको शिशाऊ कहते हैं, वो ख़वातीन के प्योरिफिकेशन के लिए होता है। We believe only one God. We have goddesses, yes, but God we have only one. When someone burns, we sing songs and we dance. And when somebody dies, and we also make dance and we also sing songs. It means that we love the universe, and when someone comes, we welcome them, and when someone goes, God bless you. In 16th, 17th and 19th centuries, the forced conversion was taken by Islamic warriors, Islamic preachers, and the people from Usun Valley, Nurdistan, and Kailash valleys, in some valleys of CHITRAL, they converted to Islam. And some people who do not convert, they run away from the places and remain in mountains. And some people, they kill themselves by putting themselves in rivers. कन्वर्जन का रेशो ज़्यादा होने की वजह से अभी लोग थोड़ा कम रह गए हैं, तकरीबन मोर देन 3800। और दूसरी बात ये है कि एक पॉवर्टी, मतलब लोग गुर्बत में, ज़्यादातर लोग गुर्बत गरीब हैं, तो वो इस कल्चर को मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो इस वजह से भी कन्वर्ट होते हैं। We have only 3 valleys left. Before we had big valleys in Ursun, Shishiku, Janjaret and Drosh. These were the bigger valleys. And at that times, the people, they converted a lot of Kailash people by force. And then the number of people, started to get less and less. I don't think so, because I don't think so. Their number is increasing day by day because they don't follow the family planning. This is one of the reasons. They don't follow family planning. यार देखो ना, मुसलमानों में हर चीज़ें जो है सिफात जो अच्छी है, वो देखो अभी वो ड्रिंकिंग करे, वाइन, वो भी इस्लाम में हराम है, वो ऐसे करे। अभी जो इनका फौतगी होता है उस दिनों में भी ये और डांस करते हैं ना, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। Nobody can force them, but the efforts that the foreign NGOs are doing
are also forcing them into cornering them into their own basic ideologies and in their own basic. They should be given a chance to gather whatever information. They should be given a chance to gather whatever spiritual motivation they want to have. If they are not satisfied, contented with their own religious motivations, they should be allowed to do it. If the children who do not know about religion, they are premature, and what is wrong, what is right, they do not know about this. The institutions should be KALASHA own institutions to preach, to teach. If they matured, okay. If I convert by my will, no problem. And there is no problem with KALASHA community as well. If somebody is converting to any religion, like if somebody is converting to Christianity, to Jews, to Buddhism, nobody put a question on that person. But when a person is converting to Islam, the whole world shouts at it, that why he's converted to Islam. Islam is a peaceful religion. We don't force people to convert into Islam. If somebody personally, with his own choice, converting to Islam, maybe that's his choice. The will of the people is very important, rather than the will of the people, the other people who are not Kalashis. Like if somebody coming from America and wanting them to be like this and like that, just because they want to see a documentary and they want to see their vibrancy and their colors and their things like that, so I think this would be an injustice to them as well. If you look at the Japanese culture, if you look at the Korean culture, if you look at most of the Europeans, they have been influenced by the West as well. Like very few people now in Japan would be wearing kimonos. If somewhere in a jungle, if some tribe is living and they are lighting the fire with a wood, why not to give them a matchbox to ease their lives? तालिबान का उस टाइम से स्टार्ट हुआ जब अथानासिस ग्रीक वॉलंटियर को यहाँ से किडनैप किया गया था। उसके साथ एक पुलिस गार्ड भी था, वो भी बेचारा शहीद हो गया था। फिर हमने बहुत प्रोटेस्ट वगैरह करके उसको किसी न किसी तरह वापस लेके आए। उसके बाद दोबारा अटैक में उन्होंने बकरियां भी लेके गए और एक बच्चे को भी लेके गए, उसको बहुत बुरी तरह बाउंड्री पे कत्ल किया गया। फिर उन्होंने वीडियोस हमें भेजे, लेटर्स भेजे, किसी न किसी तरह उन्होंने डराने की कोशिश की है। कह रहे क्या या तो आप कन्वर्ट हो जाए, अगर नहीं हो रहे हैं तो हम आप लोगों का ये आशर करेंगे, हम आप लोगों को मार देंगे। और जब भी कोई फेस्टिवल होता है, लाइक स्प्रिंग फेस्टिवल जब भी आता है, तो यहाँ पे हमसे ज़्यादा सिक्योरिटी होता है, आर्मी होता है, पुलिस होता है, सिर्फ इसी वजह से कि ये लोगों को ख़तरा है। You know, one needs to look a little bit further, and so not all people are Taliban or are trying to hurt you, and so if we eliminate fear, then hopefully eventually peace among all people will happen. But so जो इंटरनेशनल फॉरेनर्स हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आते हैं, स्टडी करके आते हैं। डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो हमें प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे लोग स्टडी करके नहीं आते। अभी चाइना का मोबाइल इतना सस्ता हो गया है कि हर दूसरे के हाथ में है, तो हर कोई तस्वीर खींचते हैं, तो फिर लोग तंग होते हैं। आप हर एक बंदे के लिए तो बंदा पोस्ट नहीं कर सकता, ज़ाहिर बात है। वो हर कोई अगर तस्वीर बनाता है तो दिन में अगर एक बच्चे की 100 तस्वीरें खींची जा रही हो, तो वो ज़ाहिर बात है वो तो अपना मुंह छुपाएगा। A lot of the different tribes around the world are much in danger. Their cultural life, lifestyle, the identity about their culture is, the society around is very much pushing on them. But they are still kind of a tourist attraction, and maybe that's what kind of keeps them, because it brings in money and it maybe preserves some of their festivals like this. The only problem is if there's too many police coming in, if there's too many tourists, in the end you can't almost see them because there's just too many others. I think all people should try and preserve old cultures, and they should not interfere and putting other rules on them, because it is so wonderful, and we should have respect for different cultures. कैलाश के लोगों में वो स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब बेसिकली वो ये है कि फाइनेंशियल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है,
क्योंकि फाइनेंस के बगैर हम किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और जो लोग फाइनेंशियल जब सपोर्ट करेंगे तभी वो लोग आगे लोगों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। हमारे स्कूलों में कोई कम्युनिटी टीचर नहीं है। ये कम्युनिटी टीचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बच्चों को पढ़ाए कि कैलाश कल्चर क्या है, कैलाश का बच्चों के लिए। तो बच्चों को कैलाशी से ज़्यादा इस्लाम के बारे में पता होता है, वो उनको कैलाशी इतना पता नहीं होता, तो उनको समझ नहीं आती हम जो कल्चर फॉलो कर रहे हैं ये क्या है। परसों सुबह जो है वो सुबह सवेरे उठेंगे, 6 बजे उठ के फिर सारे तैयार होंगे, और जितने भी न्यू बर्न्स बेबी हैं जो अभी पिछले फेस्टिवल के बाद पैदा हुए हैं, स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद, वो सारे बेबीज़ को लेकर ऊपर जाएंगे गोड स्टेबल तक, और सारे अपने अपने बेबी के नाम पे ड्राई फ्रूट लेके आएगा, लाइक मलबेरी और ये वॉलनट ड्राई फ्रूट्स, तो वो लेके आएंगे और अपने बच्चों के नाम पे वहाँ पे सदका देंगे ड्राई फ्रूट्स का। मैंने आर्कियोलॉजी में मास्टर्स किए, लेकिन फिर भी मैं अपने कल्चर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये रहे हमेशा, और मैं कोशिश भी यही करूँगी कि इसको मैं हमेशा ऐसे ही मेंटेन रखूँ।